Yes, sir. Okay, great. Wait a minute. Okay. So today we are discussing how we are adding a element into the like in that array. Okay. Like by using push and on unzipped and like splice we have that, and like how can we remove the element from the array. Okay, I will show you that one. So in that array there, right? Okay, so I need to by using push method I will do that one. Okay, it's num I will require a variable. It's like result. If I take that one result inside num dot push, inside I need to be write a number like, wait, yeah, inside I need to push that one like 5 to check. Okay, next I need to next number. If I want to print a number, let's document dot write result. I need to be print that result. Okay, I'll open that one. Let's see. So when you using push method inside that, so the element will be assigning to that last element. Have you observed that one? In that we have like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 element are there inside that array. If I add double two element inside that, so it will be assigning in the last part after that k. Okay, so if you want to apply the element in the first, then you have to use unzipped. What is that? Unzipped, unsift. Okay, wait, let's open your note. So I hope you understand like what is unzipped and what is post method, and we have slice method is there also. Okay, so basically slice method we are using for, already I told you that what is the slice. Okay, and how to remove a element by using pop method, all these things. It will print 12, right? 12, wait, array inside that I will done all these things. Okay, result 8. What is that? 8 is not there na. सर ये तो Okay, साइज प्रिंट कर रहा है. wait, document dot write inside if I using num dot to string. ओके, ये प्रिंट कर रहा है अभी, या अभी प्रिंट कर रहा है ठीक से. ओके, यहाँ पे हमारा दिस हैव यू ऑब्जर्व दैट वन 1 2 3 4 5 6 इज देयर inside. I will add like two number like 50 1,58,000 and 56,000. Okay, by using push method. And if I using unzipped inside that, unzipped,
So it will be added in the first of that element. Okay, 1,58,000 and 56,000. Okay, I hope you understand. If I want to remove the element by using pop method, if I use pop method, pop, okay. So in here, like 1, 2, 3, 4, 5 element are there, but here we have 3 and 3, 6 element are there. But if I using pop method inside that, it will be remove last one, 85,000. 85,000 is not there. Okay, have you heard that one? Like 45,000, 12,000, or like 64,000, 22,000, 63,000 is there, but last one is not there. If you using pop inside that, so it will be remove the last one. Okay, if I using shift inside that, let's see. So for adding the element we are using unshift, and the removing the element we are using shift. Okay, the first element is not there, like 45,000. Okay, have you observed one? 45,000 is not there. I hope you understand like how we can add and how we can remove the element from an array. Okay, yeah. हेलो So सर। hello, हाँ हेलो। yeah, सर, ये जो सर हम लोग पुश किए हैं ना एरे में, uh, एक बार में तो सर एरे में एक ही एलिमेंट पुश किया जाता है ना, यहाँ तो आप दो कर दिए थे पिछले बार। हाँ, आप जितने भी कर सकते हैं, ऐसे कोई जैसे कि नहीं है, आप कर नहीं सकते, एक ही कर सकते हैं। अब अगर कॉमा देके जो भी लिखते हैं, आप पुश हो जाता है उस अंदर। ओके, अच्छा सर, और ये टू स्ट्रिंग क्यों लगा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हाँ, नम? टू स्ट्रिंग आपको पढ़ा गया था पहले में, आप क्लास नहीं अटेंड थे। किसी को पूछ दे रहा कि टू स्ट्रिंग क्यों लगाया आपने, तो बता देंगे। ओके, आप क्लास अटेंड नहीं किए थे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, so next thing we are discussing that, like object. So what is object? So object is like using for like properties and logic. In the data is used define the properties, and logic is defined the function. So what is property and what is method? If you discuss in that, if I give an example in that property in that our like environment. So if you purchase a laptop inside, if I like find out that what are the property in that. So in the laptop we have, laptop is an object. Okay, so inside we have a name, laptop name is HP, Asus, or like Apple, whatever like laptop you purchase, this is the property name. Okay, it's the name of property. And weight, what is the weight of that? It's 2 kg or 1 or 1.5 kg. And model number, and we have RAM, ROM, all these things. These are the properties. Okay, and what is method? Method means in basically if you start the laptop, means in the shutdown or like restart, and like restore, whatever you do in that dynamically, it's the like method. Okay, you can basically understand. So I will repeat again that one. So if I like purchase a laptop, I need to be imagine that laptop is a object. Inside whatever property is there, whatever property means, what are the property are there? Name, it's like which company we are purchasing. It's like HP or like Asus or like Apple, whatever you are purchasing inside that. Okay, so what are the weight of the laptop, and like model number, RAM, ROM, these are the properties. And method, if you like what are the function action. Okay, like start, stop, or like restart, shut down, or like whatever task you are done inside that laptop, it's a word or ppt or like excel, whatever task you are doing inside that is a method. Okay, if I like talk about normally. Okay, so if we talk about like in the logical form is coding form, then what is property and what is like property. So properties define the data, whatever data you are written inside that, means in that term. Have you like already I told you that one, like in the variable I will assign a value inside that, right? But in that object we are called it that like value in the property. If I using like numeric value, it's like
variable a equal 5, this is the value we called it before. But if you talk about object inside that, so we call it about like properties. Okay, so this is the property, and whatever logic you are defining inside that, it's a function. Okay, if I call about like this one is a function, so inside that whatever logic I will written inside that is, that's why we are calling that one is function. Okay, if I give the example of that like object, let's see how we can call it the syntax of that object. So variable inside obj, and you need to write properties. Okay, so this property value. Okay, so inside value we have, if I write method, inside the method we have to write function. Okay, so basically object we are writing in the form. Okay, variable inside we are creating object is a variable name. Okay, you can call it another name also, not a worry about that. Okay, I will like written the name is object obj. Inside the property name, okay, this is the property. If I talk about the category, it's like any of that particular product name, the value, whatever value is that one. So in that method we have write function, all this like logic inside the function. Okay, these are the like variable, sorry object. Okay, if I give like a practical example in that, wait, I will give you a practical example how it's work. So I will will remove all these things, then I will show you the practically. Object. Okay, inside I need to write script one, script, sorry, it's not object, it's script. Object is my object. So inside I need to write script, it's mime type text javascript. Okay, done. So let's see, I will get a function inside that function. Okay, function, I will write the function name like f1, whatever you need you have to write inside that. Okay, so I need to be write a variable, that's my variable name is products. Okay, so inside the product I will assigning the properties, this name. Okay, name is the string, that's why I will write inside the double quotation. Okay, and so object is separated by comma. Okay, so these are the object name, and like price is the object is separated by comma, and like property and value will be separated by column. Okay, if I price 0, and quantity if I taking that one, quantity is like 0 also, sorry, it's comma, sorry, need to be separated by comma. Okay, so next I need to be define that total, I will total that one, total the function inside that. So inside that I will write the return value, what are the it returns return this dot, what is that, this is that like if you want to access the object value, then inside that function you can use this. Okay, if you access that object outside of that, then you have to
or like create a variable, then you have to access that one. Okay, so if you like accessing inside that object, like by using this, it will be, you can access that. Have you of that one, name, price, quantity, and all these things will be common. Okay, so it's quantity and it's asterisk inside that, multiply by that price. Quantity is multiplied by the price. Okay, so I need to be called at a function, another function inside that. Wait, I will write a comma, then I will write another function. Say I write a print, it's my property, print. Inside I need to be function, and okay, so I'll print that value by using document dot write. So first I need to be print the name. Okay, so name is accessed by that. You will you have to write that backtick inside that. Okay, so first one is this dot name. Okay, so next thing I require that I will using br tag for break the line. Next I need to be use uh, price. Okay, this dot price, sorry, it's product price. Wait, price. Okay, so next I require quantity and total. Okay, wait, it's br, I require another type. Okay, so next thing is I require this dot quantity. Okay, so next I require total. Wait, it's total. Next I will write access by the total, this dot total. Okay, done. So heavy of that one, name is not written inside that, and like price, quantity, all these things not written in that. So user or entered that all these things by using like prompt. We are already using the prompt. So if I using prompt inside that, so it will be giving a alert box. Okay, whatever we are entering inside that, we have like two button, it's like okay and cancel. Okay, so I will create that one in that script also. Okay, wait, inside I will create another one, it's like products dot name. Whatever I will enter inside that will be stored in that product of name. Products of name means product is a like object, inside we have name property, so it will be stored inside that. Okay, so I need to be use prompt. So I will write a message inside that, enter your name. Okay, and you have to another one, it's like products dot price. Okay, this will be also written by prompt. You have to write like enter price of the products. Okay, wait, yeah, so next is products dot quantity. Okay, you have to enter the quantity also by using prompt. We have to write inside that enter quantity. Okay, so next I need to be paint all these things by using products dot, sorry, it's spelling is a mistake, products dot print. Okay, print.
right? And print. Wait. Okay, done. So this is my object. Inside I will write a product like properties. Have you heard that? This is a property. The property name like a property data type is string, and this one is the number, and this one is the number also, and this is the property. Inside we have function. Okay, and this one is the property also. We have function, and we are like separated by the comma by each property by separated by comma. Okay, then we have to by using product. I give that one. It's product. Inside we have name, price, and quantity. Total all these things are there. Okay, so now we run that. I think already done that. We open lab server. It's already open, or yeah, it's already open. What happened? Let me check. Inside, what are the error we are getting? Live preload. Okay, it's fine, but not working. Wait, I will wrong anything. It's prompt 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 message string. All this thing I will done. Okay, I need to be called that function name. Okay, is the callback function is required. I will done that. F1 is my function name. I need to call that function the last. Okay, F1. Okay, now it's coming. Okay, at first I will enter the name Johan, and price of that 100 rupees or 1000 rupees. Next quantity is 2. Okay, done. But it not printed in that format because I think I will wrong that print option. I need that capital letter. Johan 100 2. Okay, it return fine, but the total function is not written all these things. Wait, I will check that one. Okay, return quantity. This all these things is written, but it not printed. Okay, I will give the total value also. Wait. We have this dot name, this dot price, this dot quality, quantity. All we are returning. It's document dot write. Mm, what happened in that? Wait. Document dot write. If I write inside that name, and I need to be the price, and like total is already done. This dot name price. We have quantity. Wait. Quantity, total. Okay. And return is this dot quantity, and multiply by this into price. It will access the particularly same void print. Total is number. It access all these things. Word and list. Okay. I will write again this, yeah, name Johan. It's 200 rupees. 5. Not printed again. Quantity, all these things. Wait, I will correct my charger. Anyone have any like idea about what is the error? You सर can, yeah. सर एक्चुअली एरर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम मेरे साथ हुई थी। ये पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम है, कहीं पर एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस लगा हुआ है। कहाँ पर? नो आइडिया सर, वही नहीं याद आ रहा है कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, बस पैरेंथेसिस की मिस्टेक है। Okay, right. वैल्यू ठीक से आ रहा है, बट नेक्स्ट जो टोटल रिटर्न नहीं कर रहा है, क्यों?
function inside we have done. Wait, I will check that one what happened. रिटर्न तो यहाँ पे दिया हुआ है. Okay, if I print that one is a document dot write. Okay, in the type we cannot print that one. Total. And then if I check Johan 506 प्रिंट क्यों नहीं कर रहा है फिर से. Johan 5205 फिर से क्या हुआ इसको. ठीक से आ रहा था अभी बट टोटल नहीं आ रहा है. रिटर्न ये पूरा आ रहा है टोटल राइट. तो हम क्या करेंगे इसको. ये तो टोटल हमने प्रॉपर्टी दिया हुआ है यहाँ पे. ये नंबर रिटर्न करेगा जो भी आएगा इसका. तो गलत कहाँ है हमारा. डन. ओके गाइस, मैं आपको कल बताऊंगा. अभी लाइक tomorrow I will what the error in that I will show you. Okay, because we done all this like access all this item or whatever I enter inside that, but it not like total is not counted by I don't know. If I write inside like 5 and 2 is also 5 into 2 value inside that. It's not again to wait. Go on 200. Okay, I will check that one what happened. All this we are done. Okay, I hope you understand what is the like property and what is like value and like how we are returning that object by using like in between the comma. Okay, then we have to discuss like we have array object. So what is array object? सर Yeah. आप एक ट्राई कर सकते हैं. आपने ना जो वो पूरा ऑब्जेक्ट कॉल किया है तो वो हो रहा है. अगर आप फंक्शन को कॉल करते हैं ना अलग से लाइक f1 डॉट टोटल करके पेरेंथेसिस करो तो शायद हो जाएगा. यहाँ पे या बाहर. बाहर. ओके. f1 डॉट टोटल और पेरेंथेसिस. ये वाला पेरेंथेसिस दोनों. हाँ दोनों चाहिए. हाँ और हाँ आप एक बार ट्राई करिए. मैं एंटर करता हूँ जो भी नहीं हो रहा है. या कुछ नहीं ये वाला आया है पूरा ये रिटर्न कर देता है. ये जैसे कि मल्टीप्लाई नहीं करता है. इशू हमारा ये है कि ये फंक्शन जो है आई थिंक कुछ गलत लिखा है मैंने. FU1CTI1 ये तो ठीक है. ये रिटर्न करता है ठीक से नंबर भी रिटर्न करता है बट उसको मल्टीप्लाई करने के हम जैसे कि जो भी करता है इसमें हमारा गलती है इसलिए हमको चेक करना होगा. ठीक है मैं आपको कल बताऊंगा क्या एरर है. ओके क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें टाइम बिताना होगा. इसके बाद भी बता सकता है तो टाइम बिताएंगे तो हमारा कोर्स खत्म नहीं होगा इसलिए. So next guys we have to discuss like array object. So I will give you like a brief intro about like what is array object. Okay, array object जैसे कि हम we are like
doing array by using like meta character. Okay, if I written inside that, it's like we have done like variable inside. I will write a category, and inside I will write like your name. It's footwear. Inside we need to be right footwear. Okay, and like action, whatever we are written inside that. This is the array. If I talk about like array object, so you need to be right inside that by using comma. Okay, this is the array object. Then inside the array we have object. So you know that how we are objecting, we are like written inside that its name. Inside we have to written like Johan, and like if I write price inside that by using comma, it's price. Inside I written the 20, and sorry, it's comma. So next I need to be quantity. Then you have to write quantity. Okay, next we have to write quantity as 520 whatever. Okay, so by using separated comma we are defining all this value. Okay, that also you can write any of the product name. It's like the name uh, like Harry. Okay, Harry, and by using comma, sorry, it needs to be right and write that what is that, double quotation. Okay, double quotation. Okay, next you have to write price, and I'll give you a like intro about that, how what is like object, array object, and how we are returning that object. Okay, it's 20, and like quantity, if you write quantity, you need to be comma also. Okay, and quantity is like inside we have written the quantity like 6. Okay, so this is the array object. I hope you like got a decent idea about like array object. What is array object? Okay. If you give an example, it's like a lengthy process, but because I need to be as a like create an array object inside that, then I will like access that whatever I enter inside a like if I using like that type of technology, then I have to be right inside that. So if you want to like access that value, it's also lengthy process. Okay, so it's not a like we don't have that much time to discuss that one. Okay, I will share you that example with in that. Okay, then if you getting any difficulty or like any issue, you can told me that personally. Okay, so next thing we are discussing expression and operator. So what is operator? You know that we have you if you know that C Java, many people said know that C Java like Python technology, they already know that what is operator. Sorry guys, like due to network issue, I will left that meeting. Okay, so I will discuss that operator. Okay,
You know that what is operator and all these things, like operator, it's assignment operator and arithmetic operator and like logical operator, comparison operator, all these things, you know the guys? Please let in the chat box. If you don't know, please write in the chat box. So because I will ask you, because like if I talk about like all these things, operator, then it will take like 1 day times 1 hour. Okay. So if you know better, then I don't need to be talk to teach you again, because we have to go after that. Okay. Anyone don't know, please let me know, like then I will brief you on that into like a basic part. यहाँ पे कितने बच्चे हैं? या 80 इंटर्न्स आर देयर, या अगर हम 70 लेते तो ठीक है, मैं okay, 70 interns are there, but two are replying in that chat box. Other one I will count one by one. Yeah, other one you have to give me answer inside that chat box. Okay, other one please write down. If you don't know, please feel free to write down in the chat box, so I will know better. So if you don't mind, can I ask you like what are the operator, like assignment operator, all these things? Because if you anyone don't know about that, she or he get a decent idea about that. Okay. पार्थ सर आपको पता नहीं ये वाला? No, sir. Okay, I will teach you. Okay, guys. So assignment operator जो भी operator is the object in the computer that returns a value evaluating. Like if you like talk about assignment operator, we have like additional assignment, subtraction assignment operator, and multiple assignment operator, division assignment operator, and remainder exponent assignment operator. All these things are there. So what is that? If I write down inside that, I will share my screen first. ओके, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि पता है सबको, तो इंग्लिश में ज़रूरत नहीं है. ओके, तो हिंदी में समझ पाएंगे ठीक से. तो ये जो ऑपरेटर होता है असाइनमेंट का, वहाँ पे अगर हम जैसे कि लिखते हैं ए इक्वल बी. ओके, ये होता है हमारा असाइनमेंट. बी का वैल्यू जो होता है ये ए पे असाइन होता है. ये असाइनमेंट हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. अगर हम एडिशनल असाइनमेंट का बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लिखे C इक्वल टू और लाइक A इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है, ये एक लेंथी प्रोसेस है. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A प्लस इक्वल बी. ओके, ये जो होता है हमारा एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट, लाइक इफ यू टॉक अबाउट लाइक सब्ट्रैक्शन, A minus it's like equal B. It's a subtraction. If I talk about like multiplication, multiply, then I will write down this asterisk. Inside we have y. Okay, it's the same. What is that value will be written? A equal, sorry, it's B. Okay, so it's same process. A equal A plus B. This is the value written. Okay, यहाँ पे जो हमने लिखा है कि a प्लस इक्वल टू बी, मीन्स इसका मतलब होता है कि a और b का जो भी वैल्यू आएगा a में असाइन होगा. ओके, तो अगर हम सब्सट्रैक्शन बात करें, यहाँ ऐसे ही होगा a इक्वल a माइनस b. ओके, next we have division and like remainder operator we have there. Like if I talk about division, it's like a divider b, sorry, it's equal b. Okay, if I talk about like exponent, it's like a exponent equal b. Okay, ये होता है assignment operator. Next if I talk about like arithmetic operator, we have addition, subtraction, multiplication, and like exponent, and we have increment, decrement. What is that? I will show you that one. So we have addition, this one is the addition, subtraction, multiplication, and we have division, and we have like asterisk. Exponent, sorry, exponent. This is the exponent. Exponent means a to the power b. Okay, a to the power b. It's like a x double asterisk b.
Okay, if I talk about like two example is that 2 double asterisk 3 means its value is 2 into 2 into 2. 2 into 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2. You know that all these things I don't need to explain again. 2 into, okay, 2 to 4, 4 into 8. Its value is 8. Okay, this is the exponent. So next we have increment decrement. Increment decrement means I know you know this. Partha sir, you know like increment decrement. यस सर, आ गया याद मेरे को सब. पता है आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बारे में? यस सर, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट पता है सब, उसके बारे में सब. ओके ओके ओके. तो गाइस मैं आपको एक वैल्यू देता हूँ. मुझे चार्ट बॉक्स में नहीं होगा. एक बार चार्ट बॉक्स में लिखो. जैसे कि मैं एक्स का वैल्यू दिया आपको और 5. मुझे पोस्ट इंक्रीमेंट चाहिए. क्या होगा इसका? एक्स का वैल्यू एक जैसे कि 5 ले लो. एक्स का वैल्यू ओके 5 प्लस पोस्ट इंक्रीमेंट चाहिए मुझे. तो अगर मैं एक्स का वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या होगा? Other one is write in the chat box. ये 5 होगा या 6 होगा? अदर वन दिशा ने दिए यहाँ पे. ओके ओके 5 होगा. अदर वन 6 होगा या 5 होगा? पार्थ सर ये क्या होगा? जैसे कि 5 होगा या 6 होगा? 5. ओके. सोनाली मैम, आर यू देयर? हेलो सोनाली मैम. After semicolon it's will become 6. Okay, can you define me why it's like 5? Can you? इसीलिए ये आप 5 बोल रहे हैं, मैं जान सकता हूँ क्या? So during the initialization, the value of x will be 5, and after the execution of the program, the value of x will be saved as 6. Okay, okay, okay. Great. So if I like give you like pre-increment, what is the value? It will first save the value as 6, then it will show. Okay, ये like 6 प्रिंट करेगा या 5 प्रिंट करेगा? 6. ओके ओके गाइस. तो अगर मैं 10 लेता हूँ, 10 का अगर प्री आपको चाहिए, एक्स का वैल्यू मैंने आपको 10 दिया, तो मुझे प्री डिक्रीमेंट चाहिए. राशि मैम. हेलो राशि गुप्ता मैम, आर यू देयर? Yes, sir. या कैन यू डिफाइन मी? सर पहले वो डिक्रीज होगा देन असाइन होगा. क्यों डिक्रीज होगा, क्यों असाइन होगा? सर क्योंकि वो प्री डिक्रीमेंट है, दैट्स व्हाई. ओके, अगर पोस्ट डिक्रीमेंट होता? तो सर पहले वो असाइन होता देन डिक्रीमेंट होता. ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच. So guys, what is the difference between equal to and triple equal to? It's double equal to and triple equal to. Can you write in the chat box? And which one is the strict equal? Is the double equal to or triple equal to? You have to write inside the chat box. Okay, what is the difference between that?
या अंतिमा मैम, ये जो आप बोले कि कंपेयर डाटा टाइप, ये सेम डाटा टाइप या डिफरेंट डाटा टाइप भी कंपेयर कर सकता है? सर ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिक्ट होता है, लाइक सेम डेटा टाइप में हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं। अगर हम केस लें कि 5 एक नंबर है एंड 5 एक स्ट्रिंग है, तो अगर डबल इक्वल टू से हम उसे कंपेयर करेंगे तो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा, लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल टू से करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ओके, ग्रेट। विजय सर, कैन यू डिफाइन मी नॉट इक्वल टू? हेलो सर। या कैन यू डिफाइन मी, क्या बता सकते हैं आप नॉट इक्वल टू क्या होता है? वैल्यू लेके मुझे एग्जाम्पल के। हाँ सर बिल्कुल, जैसे सर मान लीजिए x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू 5 है, ठीक ओके। है। देन x नॉट इक्वल टू 5 ट्रू हो जाएगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू भी 5 है, y का वैल्यू भी 5 है, तो y नॉट x नॉट इक्वल टू 5 ये तो फॉल्स हो जाएगा फिर इस कंडीशन में। ओके ओके, ठीक है। हाँ, सर। अब किसको पूछना है मुझे? वेट। प्रत्युषा मैम, आर यू देयर? प्रत्युषा मैम का कुछ आंसर नहीं आ रहा है, तो हम पूछते हैं उनको। प्रत्युषा मैम, शायद हम्म, हम्म, अदर कौन है यहाँ पे? लेफ्ट हो गया हूँ। ओके, बानू मैम, बानू मैम, कैन यू हियर मी? ओके, दिव्याश्री मैम, हेलो दिव्याश्री मैम, दिव्याश्री मैम, कैन यू हियर मी? यहाँ भी वो भी नहीं है। ओके, ठीक है। वेटिंग में होते ही नहीं है। कविता मैम, कविता मैम भी नहीं है। प्रकाश सर, आर यू देयर? प्रकाश पांडे। हाँ जी सर। ओके, तो आपने मुझे बता सकते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है? पता है आपको लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या होता है ये? अगर पता नहीं तो आप बता सकते हैं कि मुझे पता नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं आपको पढ़ाया नहीं अभी तक। पता नहीं है सर। ओके ओके, ठीक है, कोई ऐसे इशू नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाया होता तो हम पूछते, तो अगर मैं डांट लेता कि मैं पढ़ाया था, आप याद नहीं, मैं तो पढ़ाया नहीं अभी तक, आपको याद है कि कुछ पता या नहीं है, मैं इसलिए पूछा। ओके, बानू मैम, कैन यू हियर मी नाउ? या दिव्याश्री मैम, आर यू देयर नाउ? कैन यू डिफाइन मी लाइक लॉजिकल एंड ऑपरेटर? यहाँ पे ज्वाइन होते हैं, लीव होते हैं, ज्वाइन होते हैं, लीव होते हैं। हाँ, जो भी आपको पता है बोलो। Whatever you know, you can write in the chat box, as well as you can talk to me. Little low. यहाँ पे तो ठीक है। Pratisha ma'am, are you there now? Yes, sir. Okay, you know that like what is like? Can you define me logical operator? All these things like logical and logical or logical not? Logical operators, sir. हाँ हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में आपको पता है कुछ? अगर पता नहीं तो आप बोल सकते हैं, पता नहीं है, क्योंकि टाइम मुझे लॉस नहीं करना है, क्योंकि अभी 7 बज गया, सॉरी, यहाँ 7 बज गया। सर पता है आपको? सर लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब कि सर जब भी मतलब कोई बुलियन वैल्यू से रिटर्न करना होता है ना, तभी यूज करते हैं। नहीं नहीं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और पता है आपको कुछ ऐसे वगैरह? हाँ सर, एंड और जो होता है वो हम्म। बुलियन वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज करते हैं। नहीं नहीं, हाँ, बुलियन वैल्यू तो रिटर्न होता है, बट इसके साथ वैल्यू भी रिटर्न होता है ना, हम अगर कुछ वैल्यू हाँ सर, लिखते हैं तो। वैल्यू भी रिटर्न होगा। यस सर। हाँ, तो ये क्या होता है, मुझे पूछ रहा हूँ ये क्या होता है, क्योंकि अगर मैंने अब यहाँ पे मेरा ए लॉजिकल एंड बी है, तो मैं अगर ए का एक ट्रू वैल्यू दूँ और बी का फॉल्स वैल्यू, तो मेरा क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा या ट्रू रिटर्न होगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। आपका क्वेश्चन सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ, ए और मैं बी।
हाँ, मैं आपको बोल रहा था कि अगर मैंने टू वैल्यू लिया, टू वैल्यू के अंदर मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर डाला हुआ है। ओके, मेरा फर्स्ट वैल्यू जी। है ए, सेकंड वैल्यू है बी। वहाँ पे मेरा जो फर्स्ट वैल्यू दिया हुआ है, मेरा एक कंडीशन लिया हुआ है मैं यहाँ पे कि मेरा एक वैल्यू है, जो की वैल्यू है, ये जो ए वैल्यू है मेरा ट्रू वैल्यू है। ओके, जो मेरा बी वैल्यू है फॉल्स वैल्यू है, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। यस सर, सर रिजल्ट फॉल्स आएगा सर। और अगर मैं ट्रू ट्रू दूँ तो क्या आएगा? सर ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। तो कैसे बता सकते हैं, कैसे आपने बताया कि मुझे ट्रू आएगा फॉल्स आएगा, ये मुझे चाहिए। अच्छा, सर एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी सर, ओके लेकिन ओके, मुझे ये ठीक है। पता है। ओके ओके, हाँ जितना पता है आपको बोल। सर, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल ए का वैल्यू 5 ले रहे हैं और बी हम्म का वैल्यू 3 ले रहे हैं, हम्म तो हाँ, तो अम, तो पहले कंडीशन ए, इफ ए लेस देन बी, मैं पहले एक वेरिएबल ले रही हूँ, कोई वेरिएबल, हम्म कंपेयर, कंपेयर इज हम्म इक्वल्स टू ए लेस देन बी एंड हम्म, ए ग्रेटर देन बी। तो हाँ हाँ। इसमें इसमें इस कंडीशन में एक्चुअली रिजल्ट फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि मतलब एंड में क्या होता है, सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ओके ओके, पता, Sorry. आपको पता है ठीक से, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मुझे ही पता है, बोलिए जितना बोल सकते हाँ हाँ, एक्चुअली एंड में क्या हो रहा है कि जब मतलब दोनों साइड, दोनों चीज जब ट्रू होता है, मतलब ये एंड का इंग्लिश, सॉरी, हिंदी टर्म और होता है, तो ये और ये दोनों अगर हैं। ट्रू होते हैं तो हम्म, फिर हमारा रिजल्ट भी ट्रू ही आएगा। लेकिन दोनों में से अगर कोई फॉल्स आ जाता है तो फिर रिजल्ट फॉल्स आएगा। लेकिन और ओके में ओके, क्या होता है, ये या फिर ये, तो और आ जाता है, इसीलिए दोनों में से कोई भी अगर मतलब आए तो फिर ऐसे अगर मैंने वाइस अगर वर्सा। लॉजिकल और ऑपरेटर यूज कराऊं, अगर मेरा एक दोनों वैल्यू अगर ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा ट्रू आएगा? लॉजिकल और दोनों हाँ, ऑपरेटर, लॉजिकल जी और, जी दोनों सिर्फ फॉल्स है, हाँ दोनों फॉल्स है। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स कुछ है, आइडिया? मतलब सर तो ओके, ठीक है सर ठीक है। फॉल्स ही आए, फॉल्स ही आएगा। कंफर्म या कुछ डाउट वगैरह है? दिस और दिस ओके ओके, फॉल्स ही आएगा सर, फॉल्स ही आएगा। कैसे फॉल्स आएगा मुझे पता होगा, 100% ये बताओ। सर, बिकॉज ये या फिर वो ना, तो मतलब कि ये वो मतलब ये वो ए, मीन्स मुझे पता नहीं होता कि ये क्या होता है, ये वो क्या होता है। सर कंडीशन 1 या फिर कंडीशन 2, ओके मतलब तुम, हाँ कंडीशन 1 या फिर कंडीशन 2, अगर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों ही फॉल्स है तो और ऑपरेटर का काम ही वही है सर। अगर ओके ओके, ठीक है। दोनों, हाँ अंतिमा मैम, आर यू यस सर, देयर? यस सर। ओके, कैन यू डिफाइन लॉजिकल, ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर? ओके सर, सो फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉजिकल एंड से। तो लॉजिकल एंड वो एग्जाम्पल दे होता के है, हाँ समझाना हाँ जरा। श्योर सर। सर मैंने लिए दो वेरिएबल ए एंड बी। सो मैंने कंडीशन दी लाइक ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज ग्रेटर देन 5। अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ही मेरा मतलब जो फोर लूप या जो भी है कंडीशन वो आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ही मेरा रिजल्ट ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हुई तो एंड ऑपरेटर फॉल्स डिक्लेयर कर देगा। अब आते हैं लॉजिकल और पर। अगर मैंने किया कि x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज y इज ग्रेटर देन 5, अगर दोनों ट्रू है तो भी और एक भी ट्रू है तो भी और ट्रू देगा। हम्म। और हम आते हैं नॉट पर। तो लॉजिकल नॉट अगर मेरा जैसे कि लॉजिकल और में मैंने एक ट्रू वैल्यू दिया और फॉल्स वैल्यू दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट? ट्रू, रिजल्ट ट्रू आएगा। और मैं फॉल्स फॉल्स देता हूँ तो क्या आएगा? फॉल्स, ओके, ठीक है। मतलब दोनों दोनों में से कोई सा भी एक अगर ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा और बाकी फॉल्स हो जाएगा। ओके ओके, ठीक, नेक्स्ट। और लॉजिकल नॉट की बात करें तो अगर कंडीशन हमने कोई दी है, लाइक अगर मैंने x की वैल्यू दी 0 और अगर मैं लिख रही हूँ कि x इज लेस x इज ग्रेटर देन 5, मतलब जो हमारी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो गई तो ही हमारा लूप आगे बढ़ेगा या हमें ट्रू मिलेगा होता है। जैसे कि मेरा वैल्यू अगर फॉल्स हो गया तो मुझे ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा?
लॉजिकल नॉट में अगर आपकी वैल्यू कंडीशन के अंदर फॉल्स है तो आपकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी बुलियन में। ओके, अगर ट्रू हो तो फॉल्स हो जाएगी। ओके, ऑपोजिट होगा, आप बोल रहे राइट? यस सर। Okay, ठीक है, thank you so much. So guys, if I talk about like Antima ma'am is Antima ma'am and Pratisha ma'am, thank you so much for giving this answer. It's the correct answer because if I talk about like logical end, in the logical end, it returns true value if both value are true. Okay, otherwise it is false. In the logical or, it returns true if either one expression is true. Agar if one like one expression is if both expression are there, but in that we have a one expression, it's like one value will be true, then it will be true all the all the false, means false false false, and like false true true, and true false true, and true true true, because we have in that one either one true value is there, that's why it's a true. Okay, next one is that logical not. What is logical not inside? If you like, it's opposite. If your result is true, then it's like value is false, in that it will be false. Okay, it's a true value is false value true value, it's the opposite. Okay, I hope you understand what is the things. And special operator is there. We have you anyone know special operator? सर एक्सोर एंड एक्जूर, एक्जूर क्या होता है मुझे पता नहीं, मुझे थोड़ा बताएंगे सोनाली? हेलो मैम, सोनाली मैम, हाँ बताओ आप। हेलो मैम, सोनाली मैम, कैन यू हियर मी? यस सर। हाँ, आपने जो बोला क्या एक्जूर कुछ बोले राइट? हाँ सर, वही ना, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव राइट? सर Okay, okay, ठीक है, thank you so much. So guys, in the specialized operator we have type of yeah, other are there, but more importantly if I talk about like all these things, then we have type of we are using to like check the data types. If I talk like written a string data type or numerical data type, so by using type of we can check that value is a string or like numeric value. Okay, if I talk about like the next one is a ternary operator. What is ternary operator? I already told you that one, like we are using one condition inside, and in that if the condition is true, it will be written first one, and next we are using colon, and next we have written another one. Okay, we already use that one. If I give you example, you have to understand better. Wait. So type of is that if I using inside that. Wait, I will check that. It's type of document dot write, type of name. Okay. मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ। अनडिफाइन क्यों? अगर मैं प्राइस लेता हूँ, वेट, प्राइस मैंने आई थिंक न्यू से क्रिएट करना होगा मुझे। variable a side, if I talk about like Johan, and in that document dot write. सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। सर जो आपने अभी कोड इरेज किया है वो आप सेंड कर देंगे क्या? हाँ हाँ कर दूंगा मैंने। टाइप ऑफ ए, एरर क्या है? वहाँ है एरर। Unexpected end of input. ओके, एंड नहीं हुआ है और कॉल नहीं हुआ है फंक्शन राइट। स्ट्रिंग, ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया क्योंकि इसका डाटा टाइप मुझे चाहिए था। अगर मैंने यहाँ पे नंबर डाला हुआ है कोई भी नंबर, तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा। ओके, तो अगर मैंने बुलियन वैल्यू डाला हुआ है ट्रू, तो यहाँ पे भी ट्रू आ जाएगा, बुलियन वैल्यू आ जाएगा। ये जो होता है टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है।
नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट वन थिंग टेरिनरी ऑपरेटर। टेरिनरी ऑपरेटर, टेरिनरी ऑपरेटर OPER ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको कमेंट देना होगा आपको, बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। सो टेरिनरी ऑपरेटर क्या होता है, अगर मैंने कंडीशन लिखा है यहाँ पे a लेस देन 0, मैंने कुछ a का वैल्यू नहीं लिया बट आपको बता रहा हूँ। सो ट्रू एंड लाइक फॉल्स। तो यहाँ पे कंडीशन ये है हमारा एंड ट्रू। अगर ये जो कंडीशन ट्रू लाइक करेक्ट होता है तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू वैल्यू। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो नेक्स्ट वैल्यू रिटर्न करेगा। ये टेरिनरी ऑपरेटर होता है, हमने यूज़ किए थे, जैसे कि हमने इंडियन HTML में यूज़ किए थे। जैसे हमको प्रिंट करना था कोई जो अगर हम जैसे कि लॉगिन फॉर्म बनाए थे यहाँ पे, हमने लिए थे जब अगर हमारा वैल्यूज अगर मैच करता है, कंपेयर करता है स्ट्रिंग बोथ पासवर्ड एज मैचेस, देन आई विल प्रिंट दैट वन लाइक password mismatch or password match, all these things I already told you that one. This is the ternary operator. Okay, so this is the type of and special operator. It's like type of operator and ternary operator. We are other are there, but if I talk about the other one, then you have to confuse maybe. Okay, so requirement is like we are what is the type of operator and ternary operator. Okay, so we had done that as operator. Okay, what is operator and how many operator are there, like assignment operator, logical operator, and like special operator, all these things. So next we have to discuss tomorrow, it's a statement in JavaScript. Statement means it's if a statement like for loop, for in already we are discussing, for of already we are discussing, for loop we are discussing. Next we have to discuss like while, do while, for if else, and switch, and like what is break, continue, and we have return. Okay, next we have like try, catch, throw, all these things are there to catch that error and to throw that a value inside that we are using for throw and catch, all these things in that backend. Okay, I hope you understand these things. If you have any doubt, you can ask me in that personally. Okay, give your attendance in the chat box, like you can leave. Okay, thank you so much guys. सर एक डाउट है, हाँ भाई। स्क्रीन शेयर करूं? ओके, Thank you, sir. थैंक यू सो मच। आपका वो डाउट क्लियर हुआ अंतिमा? ये नॉट एग्जैक्टली सर, बट मैं ट्राई कर रही हूँ उस पर। ओके ओके, ठीक है। सर वो ये डाउट, स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हो रही है। सर सेम कोड लिखा है मैंने, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, वही वाला सेम कोड है, और आउटपुट मुझे अलग मिल रहा है। लाइक इसमें ये आउटपुट मिल रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करने पर, और कंसोल डॉट लॉग करने पर ये मिल रहा है। मीन्स कंसोल डॉट लॉग करने पर ये मिल रहा है और गेट एलिमेंट बाय आईडी पर ये मिल रहा है। 001 0 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला इसमें हम ओके, मुझे सेंड कर दे कोड मुझे सेंड कर दो, मैं देख लूंगा। ओके, देख के बताऊंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बाय।